Hi guys, good evening and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Juhi Sharma, and here we are with yet another current affairs session for 11th April to the 17th of April. Good evening everyone. So I think you haven't had any current affairs session in I think last Monday we have had one session, right? So it's been a lot of important news which are pending for all of you. So why not cover all such important news? And yes, today we'll be covering from the 11th of April to the 17th of April. Now, what you need to keep in mind that we are covering the news which are super important. Okay, we are covering those news which are super important. And yes, if you are new to this channel, then I would request you to subscribe to PRATHAM Test Prep's channel, because we go live, we update a lot of videos. So very informative videos for undergraduate entrances, in fact economics videos for class 12th also, 11th also, which will be very helpful in your CUET preparations, right? So yes, quickly get into that current affairs from 11th of April to the 17th of April. Now, if we quickly see the first news of the day, that is India has been elected to the 4 United Nations ECOSOC bodies. Can anybody tell me what is ECOSOC? What is ECOSOC? ECOSOC is actually the Economic Council, right? Economic and Social Council of United Nations. So India has been elected to 4 such bodies of ECOSOC, right? Now, where are the headquarters of ECOSOC? You need to know the headquarters are in New York City, right? The headquarters are in New York City. So what are those 4 bodies in which India has been elected? The name of those 4 bodies are, the first one is the Commission for Social Development, Committee for NGOs, Commission on Science and Technology for Development, and the 4th one is Committee for Economic, Social and Cultural Rights. So India has been elected to these 4 bodies of ECOSOC. I hope it is clear to you. Guys, I hope it is clear to you, right? So these are the 4 bodies of ECOSOC, and it is India's mission to New York, which informed that India has been elected to these 4 ECOSOC bodies. Okay. Now, you need to know that who is the president of ECOSOC. So the United Nations ECOSOC president is Colin Wixell-Kellapel. So he is the president of United Nations ECOSOC body. Okay. Now, moving on to the second news of the day, we have IAF's Chinook helicopter undertook the longest non-stop helicopter sortie in India. Now, this is a very important news that Indian Air Force Chinook helicopter, it undertook the longest non-stop helicopter sortie in India. Why non-stop? Because it covered a distance of 1910 kilometers non-stop for 7 hours. Okay. Now, this particular name, Chinook helicopter, is very important, right? Because first of all, it undertook the longest non-stop sortie. From where to where? It took from Chandigarh to Jorhat. Now, where is Jorhat? It is in Assam. Just for your reference, it's a city in Assam. So Chandigarh to Assam is a distance है of 1910 kilometers. Non-stop Chinook helicopter, it's a transport helicopter basically, and it covered 1910 kilometers ka distance in 7 hours and 30 minutes. That is going non-stop. Okay. Now, they can ask you a question with the name, that what is the name of this helicopter? जिसने non-stop जो है ये flight ही है. Second type of question which you can expect is कि ये जो flight है उसने कहाँ से कहाँ तक का distance जो है, from which place to which place. So from Chandigarh to Jorhat, right? Now, since it is a longest non-stop helicopter, they might ask you, although there are less possibilities of this thing, but they might ask you कि ये जो R है, what is the duration, right? कितने time तक वो non-stop चला? So it is 7 hours and 30 minutes. Now this Chinook helicopter, basically, it's a transport helicopter, right? This Chinook helicopter, very good, Afsif. It's a
ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एज इन जितने भी आपका मटेरियल होता है, मूविंग वर्कर्स, राइट, एंड इन सारी चीजों के लिए वो हेलीकॉप्टर यूज होता है। नाउ ये जो हेलीकॉप्टर बेसिकली यूज होता है, ये होता है फॉर एनडीआरएफ पर्पसेस, ओके, दैट इज द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के पर्पसेस के लिए हेलीकॉप्टर यूज होता है, ओके, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। नाउ यू मस्ट हैव सीन कि अगर कहीं पर फ्लड आ जाता है या अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है, राइट, तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराते हैं। आपने देखा होगा ना न्यूज में दैट हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराते हैं, लोगों को इवैक्यूएट कराते हैं। सो दिस इज वन सच ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो यूज होता है फॉर मूविंग वर्कर्स एंड मटेरियल्स। ऑल्सो ये एनडीआरएफ का यूज है एंड इट इज वाइडली यूज फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। तो जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा, न्यूज आप नहीं देखते, आपने नहीं देखा, सो आई एम श्योर आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, ये राइट, केदारनाथ वाली डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी कोई, तो उसमें आप देखते हो ना लास्ट सीन में जो वो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट कराते हैं, राइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर दिस चिनूक हेलीकॉप्टर इज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और उसने नॉन स्टॉप लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप सॉर्टी फ्रॉम चंडीगढ़ टू जोरहट। जोरहट किधर है? इट इज इन असम, ठीक है। नाउ इवन उत्तराखंड के चामोली फ्लड्स में भी जो फरवरी 2021 में आए थे, एज आई हैव टोल्ड यू कि कभी जब फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा यूज होता है सिंस इट इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, राइट। सो आफ्टरमैथ ऑफ द फ्लैश फ्लड्स जो चामोली में हुआ था इन उत्तराखंड, उसमें भी यही वाला हेलीकॉप्टर जो था वो यूज हुआ था, जिसने 14 पैसेंजर्स एंड 1400 किलोग्राम ऑफ लोड्स लिया था फॉर एनआरडीएफ। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरडीएफ? एनआरडीएफ स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। नाउ अगर हमने इतनी ज्यादा आईएएफ की बात कर ली है, दैट इज द इंडियन एयर फोर्स, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, दैट इज एयर मार्शल वी.आर. चौधरी। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सो अगेन चिनूक हेलीकॉप्टर कौन सा है? इट इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, आईएएफ का है। किस लिए यूज होता है? फॉर डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। कितना डिस्टेंस इसने कवर करा? 1910 किलोमीटर्स। कितने आवर्स में करा? 7 hours and 30 minutes। कहां से कहां तक करा? फ्रॉम चंडीगढ़ टू जोरहाट। एंड the last important pointer in this, that who is the chief of air staff? That is Air Chief Marshal V.R. Ambedkar, right? So this is it. Now moving on to the next news, we have Ecuador became the first country to give legal rights to wild animals. Now I'm sure that we have this app called InShots. I think all of you must, आपके फोन में होगा, सबके फोन में कहीं ना कहीं वो InShots होता है, कोई ना कोई एक ऐसा न्यूज वाला ऐप जरूर होता है, राइट, और उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा होगा, एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था दैट दिस साउथ अमेरिकन कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। नाउ यू डोंट हैव टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस न्यूज। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट व्हिच कंट्री इज दैट? द कंट्री इज इक्वाडोर, right? Ecuador became the first country to give legal rights to wild animals. Now आपको वो news याद है that, okay guys, tell me which country became the first country in the world to officially adopt Bitcoin as its legal tender? ये वाली news आपको याद है? Guys, do you remember this news? Which country became the first country in the world to officially adopt Bitcoin as its legal tender? So the name of the country is El Salvador, right? That is the first country. Now जब आपने ये न्यूज पढ़ी थी तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? We haven't read much about it. हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी कि ये कंट्री है, इसने ऑफिशियली बिटकॉइन का अडॉप्ट कर लिया है एज इट्स लीगल टेंडर, राइट? इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ एक और पॉइंट पढ़ा था दैट हु वाज द प्रेसिडेंट और वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जिनके टर्म में ये जो था आपका अनाउंस हुआ था, ठीक है? So dive के लिए ये 2 नाम हमने याद करे थे। So likewise, okay, Sadak forgot, no worry Sadak, it is El Salvador, ठीक है? Now इस न्यूज में भी you just have to memorize, you just have to remember this particular country
कि उसने अपने वाइल्ड एनिमल्स को क्या दिया है, वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं. ओके, नाउ this country is Ecuador, which is in South America. ठीक है, साउथ अमेरिका में आपका कंट्री है. वेरी गुड अभिषेक, इट इज एल सेल्वाडोर. ओके, नाउ जो इक्वेडोर की जो हाईएस्ट कोर्ट है, राइट, उन्होंने एक रूलिंग दी है. किसके फेवर में दी है? रूलिंग दी है एक वूली मंकी के फेवर में, जिसका नाम था एरेस्टिना, राइट. इसके फेवर में दी है दैट उसको घर ले जाया गया था, राइट, फ्रॉम अ होम टू अ जू. And उसके बाद she passed away, the monkey, she passed away a week later. In this particular case, इसके लिए जो ruling दिया गया है, right? Samahi Pacha, please, I would request you to drop me a telegram message. We have to study for 12th NCERT from. No, beta, the basics is 12th NCERT. आप 12th के NCERT से पढ़ो, वो basics रखो, उसके level के लिए questions आपको मिलेंगे. Okay, Samahi? 12th NCERT, also CUET, they have released this syllabus. Just go and match the syllabus. कौन-कौन से topics आपने पढ़ने हैं. Okay, बेटा? Good luck for your preparation. Now, court ने क्या decide करा? Court ने decide करा, वो जो monkey था जिसका नाम था एरेस्टिना, उसके favor में decide किया कि भाई उस particular जो animal है, wild animal है, उसके legal rights जो है वो violate हुए हैं, and these legal rights which are violated by the government. However, उन्होंने उसके साथ साथ क्या ऐड करा कि एनिमल की जो लीगल राइट्स है वो भी वायलेट होते हैं. कौन वायलेट करता है? बाय दी ओनर्स. ओनर्स के थ्रू वायलेट हो जाते हैं. व्हाई? जब उस पर्टिकुलर एनिमल को बहुत ही यंग एज में उसका जो नेचुरल हैबिटेट था जू, वहां से वापस ले गए थे. तो कोर्ट ने क्या अपनी फाइनली स्टेटमेंट दी? कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि भाई एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, एनिमल्स के भी राइट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है. दैट इज राइट ऑफ द नेचर. ओके, सो इक्वेडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री in the world to give legal rights to whom? To give legal rights to animals, right? To wild animals. Now, आपको president पता होना बहुत जरूरी है. The president of Ecuador is Bolívar Lasso. He is the president of Ecuador. So this is the very important news that a South American country, Ecuador, became the first in the world to give legal rights to their wild animals. Now, next news is FDA authorized first ever breathtaking test for detecting COVID-19 infections. Now, COVID-19 infection को डिटेक्ट करने के लिए जब से कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ वेज. पहले क्या था, आपने देखा होगा एक RT-PCR टेस्ट था, राइट, एंटीजन टेस्ट था. उसके बाद कोविड सेल्फ करके एक किट डेवलप हुई कि आप घर पर ही अपना कोविड टेस्ट ले सकते हो, राइट. सो डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, राइट. देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दीज डेवलपमेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस. माय पॉइंट इज, जो ये न्यूज आई है उस न्यूज में क्या है कि नाउ कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको एक ब्रेथ टेस्ट के साथ भी डिटेक्ट किया जा सकता है, राइट. इट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू अ ब्रेथ टेस्ट. नाउ दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल सच पीपल जिनको जो आपका जो रेगुलर कोविड टेस्ट जिस तरीके से होता है उससे प्रॉब्लम है, राइट. उनको स्नीजिंग होने लगती है बहुत ज्यादा, या उनको कॉफिंग होने लगती है बहुत ज्यादा, राइट, जब कोविड का टेस्ट होता है. सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर दोस पीपल जिनको वो सारी चीजों से कि समथिंग गोज इनसाइड देयर नोज तो थोड़ा एलर्जिक है फॉर दैट, राइट. सो FDA, दैट इज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक ऐसा टेस्ट निकाला है which is a breathing test for detecting COVID-19 infection, right. Now ये जो आपका है फर्स्ट टेस्ट जो है इसका नाम है इंस्पेक्ट IR COVID-19 Breathalyzer. Okay, that is the name, Inspect IR COVID-19 Breathalyzer. And ये जो है ये डिटेक्ट करता है COVID-19 through the breath for emergency use. Okay. Now this is not such thing कि as of now कोई भी इसको यूज कर सकता है. ये जो आपका ब्रेथ टेस्ट है ये इन हॉस्पिटल के premises, इन डॉक्टर्स के ऑफिस, right, in the mobile testing sites, basically it use an instrument, right, वो आप अपने लगेज में डाल सकते हैं. These people actually for now they can take this test, right. So this test has been authorized for the use in doctor's office, hospitals and mobile testing sites, right. Now how you can use it or what is the way in which this particular breathing test can be used? सिंपल है, जो टेस्ट किट है उसको कनेक्ट किया गया है ट्यूब के साथ.
पेशेंट को कुछ नहीं करना, they just have to breathe out in that particular tube, and within 3 minutes, right, within 3 minutes आपको पता चल जाएगा that whether a person is COVID positive or not. So this is a very quick, a very easy test of detecting COVID-19, right? Infection क्या नाम है? Inspect IR COVID-19 breathalyzer, right? Now it is not like ये टेस्ट कोई भी परफॉर्म कर सकता है. It will be performed only under special guidance, as in जो qualified trained operator है, किसी के सुपरविजन, किसी हेल्थ केयर सुपरविजन के गाइडेंस में ही टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, राइट? नाउ ये जो थ्रू अ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द breathalyzer test, it requires additional confirmation through a PCR test. Now अब ये जो है आपका breathalyzer, right, it is not a confirmatory test as of now, it is a preliminary test, right? आपने बचपन में, not बचपन, आपने जब आप स्कूल्स में, आपने 11th and 12th में जब आपने केमिस्ट्री लैब्स में टेस्ट करते होंगे, आपने केमिस्ट्री फाइल्स बनाए होंगे, तो उसमें कोई भी टेस्ट करते हैं क्या करते हैं, वी कीप अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, इन दैट केस ओनली वी डू अ confirmatory test, right? So likewise in this particular breathalyzer too, breathalyzer is kind of preliminary test, लेकिन उसके बाद एक confirmatory test जरूर होगा through a PCR, and उसके बाद ही डिटेक्ट हो पाएगा whether a person is truly COVID positive or not, right? Now ये जो है एक सर्वे हुआ था, एक स्टडी हुई थी जिसमें breathalyzer चेक हुआ था, and it has been tested on 2409 people, जिसमें कुछ COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स भी इंक्लूडेड थे, कोई ऐसे पेशेंट्स थे which showed no symptoms of COVID-19, और जब इन पर ये इंस्पेक्ट IR COVID-19 breathalyzer टेस्ट हुआ तो with 91.2% ऑफ एक्यूरेसी उसने अपने सैंपल्स ने जो था उसने अपनी दिया, राइट, रिजल्ट्स दिए. So two things are very, very important. What is the name of the test? It is Inspect IR COVID-19 breathalyzer, right? And it is a preliminary test, right? Now moving further, we have Harshvardhan Singla appointed as the G20 Chief Coordinator of India. So he has been appointed as India's G20 Chief Coordinator, right? So Foreign Secretary है Harshvardhan Singla. Who is Harshvardhan Singla? Harshvardhan Singla is Foreign Secretary. Hello, Praveen. And he has been appointed as India's G20 Chief Coordinator, right? Next, India जो है G20 की presidency जो है December 2022 में वो assume करेगी. And first time in the year 2023, India will convene the G20 Leaders Summit. And this is the first time जब India G20 Leaders Summit को convene करेगी in the year 2023. Right? So Shringla, he will retire in few days, and he will handle the charge to Foreign Secretary Designate VM Pachara, who is currently India's ambassador to Nepal. However, Piyush Goyal जो रहेंगे वो G20 शेरपा रहेंगे. Okay? So you need to know कि जब भी ये summits होती हैं, right? So in particular summits का theme क्या रहता है overall, ठीक है? So the G20 Bali Summit 2022 जिसमें आपकी 17th meeting हुई थी of the G20 Heads of State and Government Summit, बाली इंडोनेशिया में हुई थी, तो उसकी क्या थीम थी? The theme was Recover Together, Recover Strong. So this was the theme of that particular summit. Again, repeating for you all that Harshvardhan Singla, who is currently the Foreign Secretary, he has been appointed as India's G20 Chief Coordinator. India जो है first time it will convene the G20 Leaders Summit in 2023 for the first time, and G20 presidency December 2020 में India जो है वो assume कर लेगा. Okay. Now moving further to our rankings news, it is Gujarat has been ranked in #1 Niti Aayog State Energy and Climate Index. Now, what is the full form of Niti Aayog? By now, you all must be aware what is the full form of Niti Aayog. The full form is National Institution for Transforming India Aayog, right? This is the full form of Niti Aayog, National Institution for Transforming India Aayog, right? So Gujarat ने top position acquire किया है larger states के round 1 में.
in what? In the Niti Aayog State Energy and Climate Index, right? Gujarat is at rank 1. Rank 1 पे बेटा आपका गुजरात है. At rank 2 you have Kerala and Punjab, right? Rank 3rd पे you have Punjab. ये जो है, this is among the larger states. This you need to know that this particular thing is among the larger states. Smaller states की बात करें, smaller states में number 1 पे है गोवा. In number 2 we have Tripura, and at number 3 we have Manipur. This is in the smaller states. Okay, right? So नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का एक रैंकिंग निकलता है, तो उस रैंकिंग पर क्या है, गुजरात ने टॉप पोजीशन निकाली है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड में. लार्जर स्टेट्स में टॉप पर है गुजरात, सेकंड नंबर पे यू हैव केरला, थर्ड नंबर पे यू हैव पंजाब. व्हेन आई टॉक अबाउट द स्मॉलर स्टेट्स, नंबर 1 यू हैव गोवा, नंबर 2 यू हैव त्रिपुरा, नंबर 3 यू हैव मणिपुर, राइट? अब जब हमने टॉप स्टेट जान ली है, तो आप लोग ये भी देख लो कि वेदर आपका स्टेट टॉप 3 में है या बॉटम 3 में है. So if you have to tell about the bottom 3 performers, largest state के वो है MP, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. अगर smaller states की बता रहे तो है मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. Now you must be wondering कि मैम ये state energy and climate index actually करता क्या है? So as I told you that it is related to energy, right? So इसमें there are certain parameters जिस पर आपको देखा जाता है कि whether the state is, you know, coming on to those parameters, whether the state is fulfilling those parameters. Number 1 है डिस्कॉम का performance, affordability of energy, reliability of energy, clean energy initiative, green energy initiative कितने हैं, right? Environmental sustainability कैसा है, न्यू इनिशिएटिव को स्टेट उतना कितना निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा. तो ये सारे पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर ये जो रैंकिंग्स है वो आया है. सो गुजरात, Kerala, Punjab, top 3 larger state, Goa, Tripura, Manipur, top 3 smaller states. Now, moving further, we have the next news, which is Airport Council International release list of top 10 busiest airports in the world. Now, you need to understand one thing, कि जो airport वाले जो rankings होते हैं ना, it varies, as in you need to be sure whether question आपको किस ranking का पूछा है, जो किसने release करा है. So that particular ranking has been released by whom, you have to be very very sure of that. As in ये जो top 10 busiest airport की rankings है, ये release की है Airport Council International ने, right? Release किया है Airport Council International ने. So you have to be sure question में clearly आपको mention होगा, specify होगा that which is the busiest airport in the world according to the Airport Council International. So you have to be very very sure कि किस चीज से पूछा है. Now ये जो आपकी रैंकिंग है, ये रैंकिंग जो निकाली है उन्होंने निकाली है for the year 2021. ये जो डेटा है 2021 का डेटा है, as in 2 साल आपके पूरा पैंडेमिक में चले गए. So post pandemic, what is the state of air traffic, what is the state of you know, the airports and all, कितने busy हैं, how many people are traveling and everything, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है. that what is the sign of traffic recovery post pandemic world में, right? So आपका ये जॉर्जिया का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है टॉप पोजीशन पर है as the busiest airport in the world. सेकेंड पर है आपका डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड द थर्ड वन आपका यूएस का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो दीज आर द टॉप 3 busiest airports in the world, right? Now जो 2020 में Guangzhou Baiyun इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसने 2020 में टॉप रैंक जीता था एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट. इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग वो वापस 8 नंबर पर आ गया है. नाउ अगर आपसे इसमें पूछा जाएगा दैट विच कंट्रीज एयरपोर्ट्स का सबसे ज्यादा नंबर है इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग्स, सो दिस इज एक्चुअली यूएस. अगर मैं टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बात करूं, सो 8 आउट ऑफ 10 आर इन द यूएस, राइट? यूएस के 8 आउट ऑफ 10 एयरपोर्ट्स इस टॉप 10 की रैंकिंग में है. बाकी के जो 2 एयरपोर्ट्स हैं, दोज आर इन चाइना, राइट? हाउएवर 2020 में
जो पैसेंजर्स, जो ग्लोबल पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं इन द ईयर 2020 2021 में, बेसिकली वो बहुत ज्यादा कम हो गए एंड यू कैन से दिस इज ड्यू टू द फियर ऑफ कोविड, द फियर ऑफ पैंडेमिक। इसकी वजह से 50% ड्रॉप हो गया है इन पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू the next news, which is Mumbai and Hyderabad recognized as 2021 Tree City of the World. I am sure you might have recalled this particular news. अगर आप 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं इन प्रथम्स कंटेंट, इन प्रथम्स मॉक आपने देखा होगा, that which is which city has been announced as the 2023 city of the world, right? So that is Hyderabad. लेकिन इस साल हैदराबाद के साथ मुंबई को भी रिकॉग्नाइज किया है as the 2021 Tree City of the world. Now you must be noticing कि now what is Tree City, right? आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि Tree City का क्या मतलब है, क्या किसी ट्री के ऊपर सिटी बनाया है? No, it is not like that. Tree City actually means कि urban trees कितने हैं, urban trees in terms of कि urban areas में what is the proportion of greenery, what is the proportion of tree, right? So that a healthy, happy city, growing trees, maintaining urban trees, क्योंकि usually क्या होता है urban area में कि trees को cut करके buildings बनाते जाते हैं, but since we know that it is showing a very negative impact on the environment, so ये सारे initiatives जो है वो लिए जा रहे हैं, और ये जो initiative है वो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आबडे फाउंडेशन का है, जिन्होंने जॉइंटली मुंबई एंड हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया है एज 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव सक्सेसफुली मेंटेन्ड ग्रोन द अर्बन ट्रीज। उनका वो कमिटमेंट टू बिल्ड अ ग्रीन सिटी वो उन्होंने देखा है। हाउएवर हैदराबाद का सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है टू बिकम ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 2020 में भी हैदराबाद था, 2021 में इट वाज बोथ हैदराबाद एंड मुंबई व्हिच वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। 2020 में इट वाज ओनली हैदराबाद, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद एंड मुंबई, 136 other cities from 21 countries उनको रिकॉग्नाइज किया है इन द थर्ड एडिशन ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट। मतलब अगर ये वर्ल्ड की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीज होंगी, देयर विल बी वर्ल्ड की सिटीज टू। सो आउट ऑफ 136 कंट्रीज जो ये पूरे मेंटेनिंग द ग्रीनरी एंड अर्बन पीस के पैरामीटर में है, ओनली 2 इंडियन सिटीज आर देयर, दैट इज मुंबई एंड हैदराबाद, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन वो है आपकी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन रोम, इटली। नाउ दिस इज वन निमोनिक एड जो हम हर बार आपको बताते हैं, अगर आपने इफ यू हैव अटेंडेड एनी ऑफ आइदर माइन और हिमा मैम्स क्लास, आपको पता होगा कि जब भी आपके फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, इट कैन बी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जब भी ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, so in majority of the cases the headquarters are in Italy, right? Food related organization जो होते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको क्वेश्चन में पूछा है दैट कोई फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? उसके बारे में आपसे पूछा where are the headquarters of this organization, आपको नहीं पता, अगर ऑप्शन में इटली is given, right, there are high percentage कि इटली right answer हो। Why? Because majority of the food related organization के headquarters आपके इटली में ही है, right? So आप इटली को ऐसे याद कर सकते हो, इटली इससे मिलता जुलता एक फूड आइटम इज इडली, right? तो ये आप दिमाग में बिठा सकते हो, इडली सिंस इट्स अ फूड आइटम, तो इटली जो है कंट्री, इससे आपको याद रह सकता है द फूड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। नाउ ये था आपका एक क्विक निमोनिक एड, राइट? Now moving further to the Director General of Food and Agriculture Organization, it is Q Jong-yu. ये है आपके current Director General of FAO. Okay. Moving on to the next news, we have Prime Minister to be honored with Lata Dinanath Mangeshkar Award. Now, recently, Lata Mangeshkar ji passed away, and उनके जाने के बाद जो मंगेशकर फैमिली है, they have announced that in honor to to honor Lata Mangeshkar ji, awards दिए जाएंगे, right?
एंड उनके ऑनर में जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो शुरू किया गया है. ओके, सो दिस लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, राइट, ये जो है अभी सिंस लता मंगेशकर जी है फ्रॉम द सेम फैमिली, ठीक है. सो लता मंगेशकर के जो फादर है, राइट, ऑन हिज 80th डेथ एनिवर्सरी ये जो पर्टिकुलर डे है वो मार्क किया गया है. Right, we all know that Mangeshkar family has given a lot of, you know, renowned singers to India. ठीक है, तो फादर ऑफ लेट लता मंगेशकर जी के जो डेथ एनिवर्सरी है उनके फादर की, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी की, तो उनके ऑनर में ये जो आपका है अवार्ड वो अनाउंस किया गया है. एंड दिस ईयर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? इट विल बी गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, राइट. हाउएवर, जो एक स्पेशल ऑनर वाली भी जो कैटेगरी है जिसका नाम है मास्टर दीनानाथ पुरस्कार इन द स्पेशल ऑनर, जो दिया जाएगा फॉर डेडिकेटेड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, 2 लोगों को दिया जाएगा, वेटरन एक्टर आशा पारेख जी एंड जैकी श्रॉफ. सो इन लोगों को वो 2 अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे. नाउ ये जो आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, ये अवार्ड एवरी ईयर इट विल बी गिवन ओनली टू वन इंडिविजुअल जिसने path-breaking, spectacular contribution, exemplary contribution दिया है to the nation, to its people and its society. This year it's been given to Prime Minister Narendra Modi ji, right? And the last news of the day is we have children's book on life and times of Dr. BR Ambedkar released. Now, एक new book है जिसका नाम है The Boy Who Wrote a Constitution. It is a play for children on human rights. This book is particularly written, you know, it's a children's book basically on the life and times of Dr. BR Ambedkar. ये जो book है, ये book किसने लिखी है? This book is written by author Rajesh Talwar ji, published by Ponytail Books. Okay, so क्या है इसमें? Fact-based drama है, and it is based on Dr. BR Ambedkar's own recollection of his childhood, right? And अभी recently we have observed Ambedkar Jayanti, right? तो अभी जो निकला है Ambedkar जी की 131st birth anniversary पे ये जो particular book है, this book was released. Okay, so The Boy Who Wrote a Constitution, it's a drama, fact-based drama which is based on Dr. BR Ambedkar's life, written by Mr. Rajesh Talwar, right? That's all for it today. Thank you so much guys for staying tuned. I hope you will retain a lot of important news which we have covered in this particular session. Thank you so much for staying tuned. Do give this video a thumbs up. Do like this video. Subscribe to PRATHAM Test Prep's channel, because trust me, we go live a lot of times. We upload very, very informative videos for all of you. Thank you so much for staying tuned. Till then, take care. Bye-bye. See you in the next session.